ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍, ସେ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ର ଆଜି ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ସବୁତିକ MCQର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପିଲା ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା PDF ରେ ଟିକେ କଟିଯାଇଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ, ତେଣୁକରି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା। ହ୍ୱେୟାର ହାଜ୍ ଦ ବେବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ପିଲାଟି ବେବି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାର୍ଲ ଲେଖିବା କଥା। ହ୍ୱେୟାର ହାଜ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ। ପିଲା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ। ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ହୁ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଭ୍ଡ ଇଫ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ତା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ବିବାହ ନ କରିକି। ତେଣୁକରି ସେ କାହା ମନରେ ପ୍ରତାରଣା ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଝିଅଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ନା ଦି ଲଭରର ମନରେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଦି ଲଭର କାହାକୁ ସୂଚଉଛି ପିଲେ ନା ତାର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ କି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର ସେଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। ଏକଥା କିଏ କହିଛି ନା ଦି ମଦର। ଏକଥା କିଏ କହିଛି ଦି ମଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ହୁଜ୍ ଭଏସେସ୍ ଆର୍ କଲିଂ ଟୁ ଦ ଗାର୍ଲ। ହୁଜ୍ ଭଏସେସ୍ ଆର୍ କଲିଂ ଟୁ ଦ ଗାର୍ଲ। କାହା ଭଏସ୍ କିଏ ତାକୁ ଡାକୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନା ଦ ଫେୟାରି ଫକ୍। ତେଣୁକରି 5 ନମ୍ବରର C ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ ବୁଝା ହେଉଛି ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। କ'ଣ ପିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ତେଣୁକରି 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ମଦର କନଭିନ୍ସେସ୍ ଅର୍ ଡଟର ଡ୍ୟାସ୍। ମଦର କନଭିନ୍ସେସ୍ ଅର୍ ଡଟର ଡ୍ୟାସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁକି ମା' ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ମଦର ସେଜ୍ ଟୁ ହର୍ ଡଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦି ଲୁମ୍। ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଲୁମ୍। ତେଣୁକରି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ C। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ଯିବା। ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଦେଖ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱେଡ଼ିଂ ସେରିମନି। ୱେଡ଼ିଂ ସେରିମନି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗ। କ'ଣ ପିଲେ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଲେଜର ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଲେଜର ମିନ୍ସ ମାନେ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଏ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। 10 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦି ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସଟା କେଉଁ କଲର୍ ଥିଲା ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ୍। କ'ଣ ପିଲେ ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ୍। ତେଣୁକରି 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ C ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 12 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱର। ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ C ଟୁଡେଜ୍ ପ୍ଲେଜର ଇଜ୍ ଟୁମରୋଜ୍ ସର। ଟୁଡେଜ୍ ପ୍ଲେଜର ଇଜ୍ ଟୁମରୋଜ୍ ସର। ବୁଝିପାରିଲ ଗାର୍ଲସ ଯେଉଁ ସେ ଝିଅଟା ମତରେ ପ୍ଲେଜର କେଉଁଟା ସର କେଉଁଟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ସେ ଅତୀତର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଅତୀତର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ମଦର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ମଦର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ତେଣୁକରି 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ C ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପୋଏମ୍ଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। କ'ଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିଏ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହନି ୟୁଜ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମଦର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ହନି ଯେଉଁ ମାଆଟି ଶିଶୁକୁ ହନି ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରିଛି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ಬೋଧନ କରିଛି ନା ତାର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନକୁ। ତେଣୁ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ C ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ଦ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ଗ୍ରିଭ୍ ହର୍ ଲଭର ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଗ୍ରିଭ୍ ହର୍ ଲଭର ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଭାରି ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ଟୁ ମ୍ୟାରି ହିମ୍ ହାଇଡ଼ିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲଭର। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ ପିଲା ଏଠି ସବୁତିକ ଦେଇଛି
बुझिपारछ तेणुक लिविंग द हाउस होची रिफ्यूजिंग टू मैरी हिम मत बहुत करने मना भी करुच्ची हाइडिंग अवे फ्रॉम द लवर माने जंगल जाऊँगी माने कौन चाहूँगी बहुत न करने लुचि जावाई तेणुक ऑल ऑफ द एबव ये सठिक उत्तर 16 नंबर ऑप्शन डी हम सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 7 नंबर जे देख 7 नंबर प्रश्न देखिए द मदर हार्ड फेड द हनी चाइल्ड हर डटर ऑन डैश तो देख 7 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची कौन न्यूट्रियस एंड डिलीशियस फूड कौन न्यूट्रियस एंड डिलीशियस फूड तेणुक 7 नंबर ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देख क्वेश्चन नंबर 18 द डॉटर इज बीइंग कॉल्ड बाय द डैश द डॉटर इज बीइंग कॉल्ड बाय द डैश कॉल्ड बाय द कौन लवली फेरीज कौन लवली फेरीज जोटा कि आमर कौन यहाँ कहते आमर स्वर्गीय परी जो मैंने बुझीपार लवली फेरीज स्वर्गीय परी पे देख परवर्ती प्रश्न द डॉक्टर्स ब्राइडल रोब्स आर डैश पे 19 नंबर देख द डॉक्टर्स ब्राइडल रोब्स आर व्हाइट एंड सफ्रन कौन बोले व्हाइट एंड सफ्रन 19 नंबर ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर जोटा कि सिल्वर एंड सफ्रन सिल्वरटा ही व्हाइट कलर। तो देख द विंड ऑफ डेथ हैज द यूज ऑफ डैश द विंड ऑफ डेथ हैज द यूज ऑफ डैश 20 नंबर क्वेश्चन की जा 20 नंबर प्रश्न पे कौन हम द विंड ऑफ डेथ हैज द यूज ऑफ मेटाफर कौन मेटाफर तेणुक 20 नंबर ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर। तो देख 21 नंबर इन द फ्रेज द फेरी फॉक द रिपिटेशन ऑफ एफ कन्वेंस डैश तो देख 21 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची कौन ना ये हम कौन आलिट्रेशन कौन बोले हम आलिट्रेशन 21 नंबर बी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे जा देख 22 नंबर प्रश्न परवर्ती प्रश्न पे 22 नंबर देख हनी चाइल्ड हियर हनी रेफर्स टू डैश हनी चाइल्ड हियर हनी रेफर्स टू डैश पे 22 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी कौन ऑल ऑफ द एबव 22 नंबर डी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 23 नंबर जा देख पे 23 नंबर प्रश्न देख द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैप्शंस ऑफ सरो द अंडरलाइन वर्ड मीन्स डैश पे देख 23 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तरटा तुम मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देखिए केते पिला सठिक उत्तर दे पारछंती ठीक अच्छे पिले प्रतिदिन तो गोटे क्वेश्चन ही तुम मानी दिए तेणुक 23 नंबर आंसरटा तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। परवर्ती प्रश्न पे 24 नंबर जा द ब्राइड टू बी फाइंड्स इरेस्टिबल टू डैश तो देख 24 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए द प्लेजर ऑफ द फेरी लैंड कौन द प्लेजर ऑफ द फेरी लैंड। परवर्ती प्रश्न पे जा 25 नंबर प्रश्न को 25 नंबर प्रश्न देख कौन देखिए व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन द लाफ्टर ऑफ द सन एंड विंड ऑफ डेथ बोले 25 नंबर प्रश्न देख 25 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जोटा कि मेटाफर कौन बोले मेटाफर। परवर्ती प्रश्न 26 नंबर जा 26 नंबर प्रश्न देख देखिए कौन नाउ द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग द वर्ड ब्लोइंग हियर मीन्स डैश पे 26 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची एटार ब्लोइंग माने कौन ना बर्स्टिंग इनटू फ्लावर बर्स्टिंग इनटू फ्लावर तेणुक 26 नंबर ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे देख 22 नंबर सॉरी 27 नंबर जा 27 नंबर देखिए लोटस लिलीज ग्लिसन इन द कोयल हंटेड रिवर आइसलेस हियर ग्लिस्टन मीन्स डैश प्लेट जो ग्लिस्टन माने कौन कहुच्छी ग्लिस्टन माने देख स्पार्कलिंग हम ग्लिटर हम ट्विंकल हम तेणुक ऑल ऑफ दी एबव किंतु पिले देख एटी किंतु ग्लिटर्स मैंने ग्लिटर को ही बुझाऊँगी बुझिपार ग्लिटर को ही बुझाऊँगी किंतु सबुतिकर अर्थ ही सैया सबुतिकर अर्थ ही सैया तेणुक 27 नंबर कौन करदेव ऑल ऑफ दी एबव बुझिपार पिले। परवर्ती प्रश्न 28 नंबर जा डैश आर डिवाइड ऑफ सरो तो देख 28 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए फॉरेस्ट नोट्स पे 29 नंबर प्रश्न जा द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैप्शंस ऑफ सरो द स्पीकर हियर इज डैश पे 29 नंबर प्रश्न देख 29 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची द ब्राइड टू बी कौन द ब्राइड टू बी पे देख सब सरला तेणुक देख ये जो 27 नंबर प्रश्न आम डिस्कसन करते लोटस लिलीज ग्लिसन इन द कोयल हंटेड रिवर आइसलेस हियर ग्लिस्टर मीन्स ग्लिटर पिले किंतु ये ग्लिस्टर माने स्पार्कलिंग भी हो पार ट्विंकल भी हो पार जो तारा मैंने देखो रात जो जगचग करते से प्रकार ग्लिटर ग्लिसन को ट्विंकल कहुए बुझीपार
किंतु लोटस लिली जेट जो ग्लिसन कर ग्लिटर को बुझाऊँगी किंतु देख आम आंसर सीट चेक कर 27 नंबर से ऑल ऑफ दी एबव देती तेणुक आम कौन करवा जेहेतु आम यहाँ ओस्टार डिस्कसन करुचे तेणुक जहाँ सी आंसर सिलेक्ट कर आंसर ही गले ठीक हम कहीं आम ठार जहाँ भी अभिज्ञ आ अनुभूति संपन्न शिक्षक ठीक है पिला रोचे नेक्स्ट क्लास भेट हाँ से समस्त विदाय।